संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से 25 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्ष की अवधि के लिए वायर्ड एंड वायरलेस प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय मंडकली मैसूर में 30 करोड़ रुपए की लागत से वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वी स्केल इट कार्यक्रम को विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए इंक्यूबेशन और त्वरण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्यक्रम उत्पाद सत्यापन, बाजार में प्रवेश और परिचालन के विस्तार के लिए आवश्यक उपकरण, मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जैव प्रौद्योगिकी नीति 4.0 की घोषणा की गई है। कर्नाटक ने राज्य में वैश्विक क्षमता केंद्रों को आमंत्रित करने के लिए देश में पहली बार कर्नाटक वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 की घोषणा की है। 19 से 21 नवंबर 2024 तक आयोजित बेंगलुरु टेक समिट में 51 देशों के 35,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। निवेशक संपर्क जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से स्टार्टअप्स को इस समिट से लाभ हुआ है। वर्तमान में 1.62 करोड़ उपभोक्ता गृह ज्योति योजना के तहत सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अगस्त 2023 से जनवरी 2025 तक बिजली आपूर्ति कंपनियों को कुल 17,290 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। मेरी सरकार ने 2000 मेगावाट शरावती पीएससी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 11 मार्च 2024 को 8,645 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी किए गए हैं। 19 दिसंबर 2024 को अपशिष्ट से ऊर्जा योजना के अंतर्गत बिड़दी में अपशिष्ट से बिजली बनाने वाला 11.5 मेगावाट का बिजली संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया गया है। किसानों की जीवन शैली में सुधार लाने और किसानों को दिन के समय विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के लिए 40,000 ऑफ ग्रिड और पंप सेटों के विकेंद्रीकृत फीडर सोलराइजेशन के लिए पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2,392 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं शुरू की गई है। राज्य की जनता के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप 1,28,48,173 राशन कार्डों के कुल 4,48,41,976 लाभार्थियों को अन्न भाग्य योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो अनाज उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य सरकार उनके लिए घोषित 5 किलो अनाज के एवज में प्रति व्यक्ति प्रति माह 170 रुपये की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने जुलाई 2023 से सितंबर 2024 तक 10,009 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। पहले चूंकि केंद्र सरकार की एजेंसियों ने कहा था कि वे चावल नहीं देंगे, इसलिए हमने मनी ट्रांसफर व्यवस्था शुरू की थी। अब चूंकि भारतीय खाद्य निगम चावल उपलब्ध कराने के लिए आगे आया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 15,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है। पिछले 20 महीनों में राज्य भर में लगभग 5,000 एकड़ अमूल्य वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है, जिसमें बेंगलुरु शहर में 117 एकड़ भूमि शामिल है। बेंगलुरु शहर में हरित पट्टी और दुर्लभ पक्षियों के आवास की रक्षा के लिए हेसरघट्टा झील क्षेत्र के 5,678 एकड़ क्षेत्र को ग्रेटर हेसरघट्टा संरक्षित घास का मैदान घोषित किया है और भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई गई है। यलंका के पास मादप्पनहल्ली में 153 एकड़ के बागान में एक वृहद वृक्ष पार्क का विकास शुरू किया गया है। पिन्या प्लांटेशन में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली बंद हो चुकी एचएमटी को
दी गई 14,300 करोड़ रुपए की वन भूमि को पुनः प्राप्त करने तथा इसे हरित क्षेत्र के रूप में बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2024-25 में 78.9 किलोमीटर रेलवे बैरिकेड्स लगाए गए हैं तथा मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए बांडीपुर में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों के वन मंत्री और अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। मानव हाथी संघर्ष पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया तथा बेंगलुरु चार्टर तैयार कर उसे मंजूरी दी गई। राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की गई है। एनीमिया मुक्त पोषण कर्नाटक परियोजना शुरू की गई है और जब 10.8 लाख पीयूसी छात्रों की एनीमिया के लिए जांच की गई तो 32.5% बच्चे एनीमिया से पीड़ित पाए गए। इन बच्चों को दिए गए रक्तवर्धक उपचार के कारण एनीमिया से पीड़ित 60% बच्चे ठीक हो गए। दूसरे चरण में पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चों की एनीमिया स्थिति की जांच शुरू की जा रही है। आशा किरण योजना के तहत 1.4 करोड़ लोगों की जांच की गई है और 3.3 लाख लोगों को मुफ्त चश्मे दिए गए हैं। 93,800 लोगों की मोतियाबिंद की सर्जरी की गई है। निमांस के सहयोग से कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव योजना शुरू की गई है और 2,60,878 लोगों की जांच की गई और 32,630 न्यूरोलॉजिकल रोगियों का इलाज किया गया। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 108 आरोग्य कवच आपातकालीन सेवाओं को 288 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 39 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रदान की गई है। राज्य में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस केंद्रों की संख्या 192 से बढ़ाकर 220 कर दी गई है, जिससे 3.67 लाख डायलिसिस साइकिल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में 50 बिस्तरों की क्षमता वाले 5 मातृ एवं शिशु अस्पताल, 50 बिस्तरों की क्षमता वाले 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक तथा 100 बिस्तरों की क्षमता वाला एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 857 करोड़ रुपए के अनुदान से पीएचसी, सीएचसी तथा तालुक अस्पतालों के 88 कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जीव सार्थक संस्था के 78 अस्पताल हैं, जिनमें 4 सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं जो अंग प्रत्यारोपण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। अब तक 344 बीपीएल मरीजों को एससी/एसटी योजना के तहत निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण किया जा चुका है। इसके लिए इसे राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना के तहत अब तक 416 हृदयघात रोगियों का इलाज किया गया है। लोगों को किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कई पहल की गई है। हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के परिसर में 143 करोड़ रुपए की लागत से 450 बिस्तरों वाला अस्पताल भवन बनाया गया है और अब तक 15,778 रोगियों और 78,848 बाह्य रोगियों को उपचार मिला है। GIMS कलबुर्गी में फरवरी 2024 से 54.80 करोड़ रुपए की लागत से ट्रामा केयर अस्पताल शुरू किया गया है और रोगियों को उपचार मिल रहा है और रोगियों को उपचार मिलने के साथ ही 52 करोड़ रुपए की लागत से मातृ एवं शिशु अस्पताल स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। KKRD भी ने गुलबर्गा में 304.20 करोड़ रुपए की लागत से 371 बिस्तरों वाला जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च का निर्माण किया है,
जिसका उद्घाटन 22 दिसंबर 2024 को किया गया है। गदग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 10 करोड़ रुपए की लागत से कैथ लैब सुविधा के साथ एक सुपर स्पेशलिटी कार्डियक यूनिट शुरू की गई है। कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड द्वारा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में अक्षरा आविष्कार नामक एक व्यापक स्कूल विकास योजना लागू की गई है। इसके लिए 700 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। राज्य के प्रत्येक स्कूल में निःशुल्क बिजली और पानी की सुविधा प्रदान की गई है, जो स्मार्ट कक्षाओं और शाम की कक्षाओं के संचालन के लिए उपयोगी है। कर्नाटक कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी में कली के चौथे कौशल्या कार्यक्रम के तहत चयनित 89 सरकारी कॉलेजों के लगभग 30,000 छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा 277 करोड़ रुपए की लागत से 101 नए कार्य शुरू किए गए हैं। युवा निधि योजना के अंतर्गत 2,23,883 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है तथा 1,65,014 पात्र अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण किया जा रहा है। इंडिया स्किल 2024 में कर्नाटक ने 45 कौशलों में भाग लेने वाले 62 उम्मीदवारों ने के 48 पदक जीते और देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड स्किल 2024 में कर्नाटक ने 52 कौशलों में भाग लेने वाले 60 उम्मीदवारों ने पदक प्राप्त किए हैं। लोगों की आवास समस्या पर गंभीरता से विचार किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 4,761.15 करोड़ रुपए की लागत से 3.05 लाख मकान बनाने के लिए सहायता दी गई है। 1.23 लाख स्थलों के आवंटन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से 4,096 एकड़ भूमि पर स्थल तैयार किए जा रहे हैं। स्लम विकास बोर्ड ने स्लम क्षेत्रों में 1,66,867 परिवारों को स्वामित्व पत्र वितरित किए हैं, जिससे उन परिवारों के लिए शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन BR अम्बेडकर निवास योजना के समन्वय से किया जा रहा है। 1,18,359 मकानों के लाभार्थियों को केंद्र व राज्य सब्सिडी को छोड़कर 4 से 5 लाख रुपए का अंशदान देना था। यह महसूस करते हुए कि लाभार्थी भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, मेरी सरकार ने लाभार्थी अंशदान को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया तथा शेष पूरी राशि का भुगतान कर रही है। 36,789 मकान पहले ही लोगों को समर्पित किए जा चुके हैं। 39,843 मकान वर्तमान में सार्वजनिक उद्घाटन के लिए तैयार है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय की 33 इकाइयों को विशेष पुलिस स्टेशन के रूप में अधिसूचित करने की कार्रवाई की गई है। इसके लिए 450 नए पदों के सृजन की अनुमति दी गई है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु 2024-25 में SC/ST के अंतर्गत 27,674 करोड़ रुपए तथा THP के अंतर्गत 11,447 करोड़ रुपए कुल 39,121 करोड़ रुपए आवंटित एवं व्यय किए जा रहे हैं। बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं के अनुसार 22 नए आवासीय विद्यालय एवं 31 छात्रावास स्थापित किए गए हैं। विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 47 छात्रावासों आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। समाज कल्याण विभाग ने 2024 में लोकतंत्र दिवस सफलतापूर्वक मनाया तथा 22 लाख लोगों की भागीदारी के साथ बीदर से चामराजनगर तक 2,500 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह समझते हुए कि संविधान विरोधी ताकतें सक्रिय हो रही है, मेरी सरकार संविधान जागरूकता कार्यक्रम चलाकर
सराहनीय कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य है कि यदि हम संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। अनुसूचित जाति के 216 विद्यार्थियों को विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु 45 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 12,858 विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में 7 जिलों में 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाले 14 पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास प्रारंभ किए हैं। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कुल 403 आवासीय विद्यालय छात्रावासों का संधारण किया जा रहा है, जिनमें कुल 45,560 विद्यार्थी रह रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि आदिवासी जनजाति आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट दर को रोकने के लिए कक्षा 7 से 8 का उन्नयन किया गया है तथा आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 25 से बढ़ाकर 40 की गई है। छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 221 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तथा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के कुल 3,67,281 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रबुद्ध योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 31 विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बजट घोषणा के अनुसार वर्ष 2024-25 में कल्याण कर्नाटक क्षेत्र सहित राज्य में 150 नए पोस्ट मैट्रिक छात्रावास शुरू किए हैं। सामुदायिक संगठनों द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है। यूपीएससी, केपीएससी, बैंकिंग, भारतीय सेना आदि परीक्षाओं के लिए पिछड़े वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोपल जिले के कनकगिरी और कलबुर्गी जिले में प्रशिक्षण स्कूल शुरू किए गए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 250 क्षमता वाले 25 मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय, 100 क्षमता वाले 96 पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास तथा 300 क्षमता वाले 50 नए मौलाना आजाद विद्यालय प्रारंभ किए हैं। वर्ष 2024-25 के बजट की घोषणा के अनुसार ईसाई समुदाय के विकास हेतु 200 करोड़ रुपए के अनुदान से विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक निदेशालय के अधीन संचालित कुल 76 मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय, महाविद्यालय, मौलाना आजाद मॉडल विद्यालय एवं छात्रावासों को 700 करोड़ रुपए की लागत से भवनों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित 161 आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों में कुल 44,957 विद्यार्थी आवासीय सुविधाओं के साथ अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन कर रहे हैं। 250 मौलाना आजाद मॉडल विद्यालयों में 38,876 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा उक्त विद्यालयों के रखरखाव के लिए 106 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उक्त योजना के तहत 1,26,24,547 महिला लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और योजना के शुरू होने से अब तक 36,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किए गए हैं। गृह लक्ष्मी योजना की सुविधा अब लैंगिक अल्पसंख्यकों को भी दी गई है। 71 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने तथा लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से भाग्य लक्ष्मी सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 15 वर्षों तक प्रत्येक बालिका को के खाते में प्रति वर्ष 3,000 रुपये जमा किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में अब तक 5,59,693 लाभार्थियों के खातों में 168 करोड़ रुपए
जमा किए जा चुके हैं। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में 10,01,379 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है तथा विभिन्न कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों के अंतर्गत 11.94 लाख लाभार्थियों को 702 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उपकर के रूप में 1515 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए हैं। निवारक स्वास्थ्य देखभाल योजना के अंतर्गत 10.63 लाख लाभार्थियों की चिकित्सा जांच की गई है। लाभार्थियों के पंजीकरण एवं लाभ वितरण के लिए राज्य भर में 43 श्रमिक सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्य असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के संबंध में कर्नाटक राज्य निजी वाणिज्यिक परिवहन श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 221 दुर्घटना मामलों में 10.61 करोड़ रुपए का दुर्घटना मुआवजा दिया गया है। अंबेडकर कार्मिक सहाय हस्त योजना के अंतर्गत 25 श्रेणियों के 21,89,945 असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करके लाभ दिया जा रहा है। मोटर परिवहन एवं अन्य संबंध श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए कर्नाटक मोटर परिवहन एवं अन्य संबंध श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया गया है तथा 5,12,135 श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की परियोजना निरंतर रखी है। 101.32 लाख घरों में से अब तक 83.94 लाख घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। वर्ष 2024-25 में 7.27 लाख घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चालू वर्ष में जनवरी 2025 के अंत तक 10.91 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं। इस योजना अंतर्गत चालू वर्ष में कुल 5,626.56 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। बाह्य सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत 5,190 करोड़ रुपए की लागत से 7,110 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु प्रगति पथ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कल्याण पथ कार्यक्रम के अंतर्गत 1,150 किलोमीटर लंबी सड़कों के विकास हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा 3,867 कुशीन मने शिशु देखभाल केंद्र शुरू किए गए हैं, जिनमें 49 बच्चों की देखभाल की जा रही है। कुल 5,895 जागरूकता केंद्रों में से 5,770 केंद्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है तथा 50.28 लाख बच्चों का पंजीकरण किया जा चुका है। इसके अलावा जिन गांवों में पुस्तकालय नहीं है वहां 6,599 नए पुस्तकालय शुरू किए जा रहे हैं। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की सीमा के भीतर यातायात की अति प्रजनन को कम करने के लिए निकट भविष्य में 40.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल सह सड़क वाली डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। संयुक्त मेट्रो रेल सह सड़क फ्लाईओवर परियोजना 8,916 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही है। बेंगलुरु पेरिफेरल रिंग रोड पार्ट 1 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ऋण सुरक्षा प्रदान करके हुड़कों से 27,000 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य लगभग 2,565 एकड़ भूमि अधिग्रहण करके किया जाना है। लगभग 73 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A में सेंट्रल सिल्क बोर्ड से कृष्णराजपुरा तक 19.75 किलोमीटर और चरण 2B में कृष्णराजपुरा से केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक 38.44 किलोमीटर लंबाई का कार्य प्रगति पर है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 14,788 करोड़ रुपए है। चरण 3 में केम्पापुरा से JP नगर तक कॉरिडोर 1
32.15 किलोमीटर और होसाहल्ली से कड़ाबगरे तक कॉरिडोर 12.50 किलोमीटर के साथ कुल 44.65 किलोमीटर लंबाई का कार्य प्रगति पर है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 15,611 करोड़ रुपए। इस परियोजना को दिसंबर 2029 तक पूर्ण करने की योजना है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु निर्भया फंड के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा वाहनों तथा कैरिज व्हीकल, स्कूल व्हीकल, प्राइवेट सर्विस व्हीकल, मैक्सी कैब, कॉन्ट्रैक्ट व्हीकल, मोटर कैब एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले मालवाहक वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी पैनिक बटन लगाने की योजना क्रियान्वित की गई है। राज्य में कुल 6,04,863 सार्वजनिक सेवा वाहनों में से 40,848 वाहनों में दिसंबर 2024 तक यह प्रणाली स्थापित कर दी गई है। बेंगलुरु में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण भारी यातायात की वजह से दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस सुचारू यातायात के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने में सबसे आगे है। ASTRAM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल ट्रैफिक मैनेजमेंट एक AI आधारित डेटा प्लेटफॉर्म है जो वास्तविक समय में डेटा एकत्र और विश्लेषण करता है और ट्रैफिक को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने के लिए त्वरित निर्णय लेता है। बेंगलुरु विकास प्राधिकरण ने शहर भर में 34 स्थानों पर आवासीय परिसरों का निर्माण करके लगभग 30,000 आवास इकाइयों को आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से अब तक 25 परियोजनाओं में कुल 14,909 फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और 10,615 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। महत्वाकांक्षी कावेरी परियोजना का 5वां चरण पूर्ण हो चुका है। BBMP में शामिल 110 गांवों के 50 लाख लोगों को 775 मिलियन लीटर अतिरिक्त कावेरी पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। बेंगलुरु शहर और उसके उपनगरों की अतिरिक्त पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 TMC पानी आवंटित किया गया है। चालू वर्ष में कार्यान्वित होने वाली परियोजना की अनुमानित लागत 6,939 करोड़ रुपए है, जिसके लिए DPR तैयार कर ली गई है। मेरी सरकार ने श्रमिक वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा कैंटीन योजना को जारी रखा है। इंदिरा कैंटीन फेज 2 के अंतर्गत 186 कैंटीनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है तथा 156 कैंटीनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। ADB और अमृत द्वारा वित्त पोषित कर्नाटक एकीकृत शहरी जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 8 शहरी स्थानीय निकायों में 2,584 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति और जल निकासी कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत हुबली, धारवाड़, बेलगांव और कलबुर्गी नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निर्बाध जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए 3,741 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्ष की अवधि के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। उक्त परियोजना को जून 2025 तक क्रियान्वित करने का लक्ष्य है। मेरी सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की अनियमित संपत्तियों के लिए खाता उपलब्ध कराने की एक बहुत लोकप्रिय योजना बनाई है और उसे लागू कर रही है। सबसे पहले कर्नाटक नगर निगम अधिनियम और कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई वर्षों से लंबित 30 लाख से अधिक अनियमित संपत्तियों के लिए खाता फॉर्म 3 भी उपलब्ध कराना शुरू किया है। आने वाले दिनों में इस सुविधा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाएगा। राजस्व विभाग किसानों की भूमि से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए भू सुरक्षा नामक गारंटी प्रदान कर रहा है। राजस्व विभाग में स्थायी प्रकृति और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करके
डिजिटाइज करके अनुक्रमित करके और सूचीबद्ध करके लोगों को आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। सॉफ्टवेयर में 9 करोड़ पृष्ठों को स्कैन करके अपलोड किया जा रहा है। राजस्व विभाग में दाखिल खारिज के संबंध में लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए दाखिल खारिज की गारंटी दी गई है। पहले एक खाते को बदलने में औसतन 32 दिन लगते थे। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के कारण अब 67% दाखिल खारिज कुछ ही घंटों में हो रहे हैं। शेष 33% दाखिल खारिज 9 से 13 दिनों में हो रहे हैं। राजस्व न्यायालय में हजारों मामले 5-10 वर्षों से लंबित थे। ऐसे लंबित मामलों के निपटारे के लिए चलाए गए अतिक्रमण के अभियान के कारण तहसीलदार न्यायालय में लंबित 10,744 मामलों में से 10,410 मामलों का निपटारा किया गया है। उप विभागीय अधिकारी न्यायालयों में लंबित 62,857 मामलों में से 37,217 मामलों का निपटारा किया गया है। सरकार के सत्ता में आने से पहले सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त विभाग में 11 ई स्केच प्राप्त करने में औसतन 90 दिन लगते थे तथा जमीन पर सीमांकन के लिए 120 से 180 दिन लगते थे। प्रभावी प्रशासन के कारण 11 ई स्केच 90 दिनों के बजाय 30 दिनों में प्राप्त हो रहे हैं। सीमांकन के मामले 45 दिनों में हो रहे हैं। राज्य में नन्ना भूमि कार्यक्रम के माध्यम से दरखास्तों पौड़ी विशेष अभियान चलाया गया है। पिछले 5 वर्षों में 5,813 दरखास्त अनुदान भूमि का सीमांकन एवं उप विभाजन किया गया है, जबकि दिसंबर 2024 से नन्ना भूमि योजना के क्रियान्वयन के बाद से 4,850 से अधिक कृषक अनुदान भूमि का सीमांकन एवं उप विभाजन किया गया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत पहली बार राज्य के इतिहास में मापी न गई ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों गांवों की संपत्तियों का ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। अब तक 3,880 गांवों को 10.05 लाख ड्राफ्ट पीआर कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के जिलों में को प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रारंभिक शेष राशि सहित 1,470 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं तथा दिसंबर 2024 तक 3,222 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। शेष कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। सरकार ने कलबुर्गी में ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक आयोजित कर 11,770 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं और कार्यों को मंजूरी दी। कल्याण कर्नाटक के रिक्त पदों पर भर्ती, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, नए न्यायालय परिसर का निर्माण, पर्यटन विकास आदि क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर क्षेत्र के समग्र विकास की ओर उन्मुख हो रहा है। सरकार ने कन्नड़ भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कर्नाटक संभ्रम 50 के तहत 1 नवंबर 2024 को हेसराइतु कर्नाटक उसीरा गली कन्नड़ समारोह में 50 पुरुष और 50 महिला उपलब्धि हासिल करने वालों को स्वर्ण जयंती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 27 जनवरी 2025 को विधानसौधा के परिसर में नाड़ देवी भुवनेश्वरी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। कर्नाटक में सभी कार्यालयों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की नाम पट्टिकाओं पर 60% कन्नड़ अनिवार्य करने के लिए कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम लागू किया गया है। मैसूर में सांस्कृतिक दृष्टिकोण चिंतन सम्मेलन, महाराष्ट्र के सांगली जिले के जत तालुक के गुड्डापुर में गड़ीनाट सम्मेलन और रायचूर में गोकाक आंदोलन पूर्व व्यापी एवं भावी व्यापी दृष्टिकोण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 2,491 किलोमीटर राज्य राजमार्गों तथा 3,103
किलोमीटर जिला मुख्य सड़कों का विकास, नवीनीकरण तथा 190 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। HSDP फेज 5 के अंतर्गत 9,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से 2 चरणों में 2,500 किलोमीटर राजमार्गों के विकास की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। राज्यव्यापी सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 4,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना स्वीकृत की गई है। CIRF योजना के अंतर्गत 1,385 करोड़ रुपए की लागत से राज्य की 2,056 किलोमीटर लंबी 295 सड़कों का विकास किया जा रहा है। मेरी सरकार 1,696 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के अंतर्गत रायचूर के निकट कलमला जंक्शन से सिंधुनूर तक 78.45 किलोमीटर लंबे राज्य मार्ग को विकसित करने की प्रक्रिया में है। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना शक्ति योजना महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जाएगी। उक्त परियोजना के शुभारंभ से लेकर 17 जनवरी 2025 तक राज्य के लगभग 376.70 करोड़ लाभार्थियों को शक्ति योजना से लाभ मिला है। सरकार ने इसके लिए 8,215 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। वर्ष 2024-25 के जनवरी 2025 के अंत तक सार्वजनिक परिवहन हेतु विभिन्न मॉडलों की कुल 4,889 नई बसें उपलब्ध कराई गई है। राज्य सार्वजनिक परिवहन निगमों की बसों में दुर्घटना में मृत यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक क्षतिपूर्ति राशि को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम ने कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना के लिए चयनित अस्पतालों के साथ ही 3 साल की अवधि के लिए समझौता किया है, जो निगम के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम में कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना को लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं और KSRTC आरोग्य योजना शुरू की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में जल संसाधन विभाग को कुल 16,837 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए तथा 36,799 एकड़ सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराई गई है। ये 3 होले एकीकृत पेयजल परियोजना के प्रथम चरण में लिफ्ट एवं विद्युत आपूर्ति कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित किए गए हैं। सरकार राज्य में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा में शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है तथा हम केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। लघु सिंचाई विभाग ने वर्तमान में 5,847 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की है। 165 बैराज बनाए गए हैं। लक्ष्मण तीर्थ नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से चिलकुंडा और अन्य गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 14 जिलों को पानी से भरने की परियोजना 19 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है और परियोजना का परीक्षण कार्य किया जा रहा है। मांड्या जिले के KR-पेटे तालुक के एचनहल्ली में 50 जिलों को भरने के लिए लिफ्ट सिंचाई परियोजना 265.29 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है और परियोजना के पहले चरण का परीक्षण कार्य किया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम की गति को तीव्र करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अध्यक्षता में दिसंबर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। मेरी सरकार ने इस ऐतिहासिक घटना की शताब्दी मनाने के लिए बेलगांव में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। पूरे राज्य में गांधी जी की नैतिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने तथा वर्तमान पीढ़ी में गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में जागरूकता पैदा करने और देश के लोगों को यह समझाने के लिए कि गांधी जी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, पूरे राज्य में राज्य भर गांधी भारत के नाम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कार्यक्रमों को इस तरह से आयोजित किया जा रहा है कि वे राज्य के हर घर तक पहुँचे।
पर्यटन नीति 2024-2029 को कर्नाटक सरकार के विजन को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नीति में पर्यटन क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप, आकर्षक प्रोत्साहन और आवश्यक विनियामक सुधारों का प्रस्ताव है। नीति का उद्देश्य एक सुविधाजनक और स्थिर पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। पर्यटकों को एक सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला अनुभव प्रदान करने और कर्नाटक के लोगों को अधिक समृद्धि और खुशी प्रदान करने पर जोर दिया गया है। गदग जिले के लक्कुंडी गांव में प्राच्या व शेष गला संग्रहण अभियान के दौरान 1000 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां एकत्र की गई है और उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन, अनुसंधान और अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खुले संग्रहालय में परिवर्तित करने की योजना है। सवदत्ती यल्लम्मा मंदिर में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। मंदिर क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें तिरुपति की तर्ज पर कतार परिसर बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को देवी के दर्शन करने में सुविधा हो। 500 छोटे आउटडोर रसोई घर बनाए जाएंगे ताकि श्रद्धालु खुद खाना बना सके और पर्याप्त शौचालय बनाए जाएंगे। सवदत्ती यल्लम्मा पहाड़ी तक रोप वे बनाने का प्रस्ताव है। देविका रानी निकोलस रोरी की 572 एकड़ की एस्टेट को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार की SASCI योजना के तहत 100 करोड़ रुपए के अनुदान का उपयोग करने के अलावा कर्नाटक सरकार भी विशेष अनुदान के साथ क्षेत्र को विकसित करने के लिए कार्रवाई करेगी। पिछले 19 महीनों में राज्य में कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। पुलिस थाने लोगों के अनुकूल तरीके से काम कर रहे हैं। हाल के दिनों में पूरे देश में साइबर अपराध के मामले बढ़े हैं। राज्य पुलिस विभाग निरंतर जागरूकता लाने और अपराधियों की शीघ्र पहचान करने के लिए काम कर रहा है, इसलिए इन मामलों में भी कमी आ रही है। पुलिस विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चालू वर्ष में 26 सुसज्जित पुलिस थाने तथा 2016 आवासीय भवन बनाने को प्राथमिकता दी गई है। परिवहन विभाग के सहयोग से ग्रामीण पत्रकारों को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु जिला सीमा के अंतर्गत यात्रा करने हेतु बस पास वितरित करने की योजना क्रियान्वित की गई है। मेरी सरकार ने ये सभी उपलब्धियां अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के आधार पर अर्जित की है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। मेरी सरकार राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहित समग्र विकास के लिए अनेक कार्यक्रम बना रही है और उन्हें क्रियान्वित कर रही है। संविधान की आकांक्षाओं के अनुरूप जन कल्याण को अपना मुख्य उद्देश्य मानकर चल रही है। सबके लिए शांति, सबके लिए समृद्धि और संविधान की भावना है। हम इस भावना का निरंतर पालन कर रहे हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक।
My humble advice to the finance minister is don't rely on only one engine of growth, consumption. Or along with cutting income tax, she should have cut the GST. Everybody pays GST. The richest and the poorest pay in GST. She could have cut the tax on petrol and diesel. Everybody indirectly or directly uses petrol and diesel. And she could have raised the statutory minimum wage across the board under the Minimum Wages Act. That would have benefited thousands and thousands of laborers. She did nothing, but she was focused on income tax and she was focused on the Delhi election. To move that the bill be introduced. The Union Budget 2025-26, I call upon Shri P. Chidambaram to raise the discussion. Shri P. Chidambaram. Mr. Chairman, I thank the Honorable Finance Minister for presenting the budget for 2025-26. There ought to be a philosophy behind the budget. But I cannot divine one in this budget. I shall not attempt to do so, because after going through the budget speech and the budget numbers, I believe there is no philosophy behind the budget. It is obvious that the budget was politically driven. I shall not elaborate upon that, but I congratulate the Finance Minister for achieving one of her objects a couple of days ago. Congratulations, Finance Minister. I would like to start on an unusual note. The Finance Ministers asked this House to appropriate 20,517 crore for the Ministry of External Affairs. Usually the MEA does not figure in a budget speech, but I want to start with the MEA. Well, I'll tell you why. In 2023-24, the past year, we allocated 28,915 crore. In the current year, the revised estimate is 25,277 crore, almost 3,600 crore less in the current year. And for next year, the Finance Minister is asking for only 20,517 crore, another 5,300 crore less. I wish the External Affairs Minister is here. I suspect that, and I hope not, I suspect that the Finance Minister is doing a Elon Musk on the External Affairs Minister. Somebody must explain. Are we shrinking our world presence? Are we closing down embassies? Are we closing down consulates? Be that as it may. A more serious aspect of the MEA. MEA stumbled badly in the last week, and I say that with responsibility. It's now clear that the United States informed India about the deportation. They gave a list of deportees. India verified the list and confirmed that 104 or so names are Indian citizens. So this was not a surprise to us. It was a surprise to the rest of the people. The deportation was known to the MEA.
the External Affairs Minister met Secretary of State Rubio a few days before the deputation. And that was all published in the newspapers. I ask the government, did the External Affairs Minister raise the matter with Mr. Rubio? Did he know about the SOP? He told this House the SOP has been in place for many years, since 2012. If he knew about the SOP, did he protest the SOP to the Secretary of State of United States? Did he know about the SOP requires them to handcuff, tie the legs with ropes and mask? If he knew about it, did he protest to Mr. Rubio? If he did not protest, why did he not protest? And the most important question, did the External Affairs Minister... Are you yielding? Are you yielding? I'm not yielding. I'm only stating on basis of what he said. He can reply later. Did the External Affairs Minister... He can reply later. Sir, did the External Affairs Minister offer to Mr. Rubio, we will send an aircraft to bring our Indian citizens back? Yes. Another serious matter, another list of 483 Indians who have been identified as illegal immigrants. I don't know when the deportation will take place. I ask a specific question. Will the government send an Indian aircraft to bring back the Indian illegal immigrants? Now I go to the Finance Minister's trump card. No pun intended, sir. Trump card. No pun intended. Sir, when you said twice, I got worried that no pun intended. You said twice, which means pun is intended. And I'm wondering whether your reference to Elon Musk is a compliment to the Honorable Finance Minister. Sir, I'm looking at my the groove clock. of efficiency. I'm looking at my clock and my whip. I'll add up the time, sir. 1 minute I'll add. Yeah, please, please. Income tax cut is the FM's main thrust of this debate, and she has given a number of interviews. The House should know that only 3.2 crore persons pay income tax, from the last figures available. The rest file returns, but they pay nil tax. She has raised the government has raised the threshold from 7 lakhs to 12 lakhs. And it applies to all taxpayers right up to the highest taxpayer. Now, I've looked at the CBTT statistics of taxpayers, the last available statistics. My rough calculation is about 80 to 85 lakh taxpayers will go out of the tax net from next year. And 2.5 crore will benefit. But the 2.5 crore includes not only the middle class, which the Finance Minister passionately championed, it includes 2,27,315 persons who returned a total income of more than 1 crore. It includes 262 persons who returned a total income of more than 100 crore. And it includes 23 persons who returned a total income of more than 500 crore. So this is not benefiting the middle class alone, which I welcome, but it's benefiting the very rich and the richest in the world. Yes. Finance ministers also claimed that she had foregone 1 lakh crore rupees. Yet she has claimed that the net tax revenues to the center will grow by 11.1% in 25-26. In 24-25 also it grew by
11%. So it's about the same number. After foregoing 1 lakh crore, in this budget, how does she claim that the net tax revenues to the center will grow by the same 11%? This is pure magic, not mathematics. I will reserve how this magic unfolds, and I will comment on it later. Secondly, the finance minister says this 1 lakh crore will go into consumption, and that consumption will boost the economy. I find initially a lot of cheerleaders accepted that claim. But in the last 2-3 days, even the finance minister's cheerleaders are becoming skeptical about it. I asked the Honorable Finance Minister, will not part of the 1 lakh crore go into savings? SBI chairman has hoped that part of it will come to him and the banking system. Will not part of the 1 lakh crore go into repaying old household debts? Will not part of the 1 lakh crore go into travel abroad? Will it not go for educating children abroad? And will it not go into consuming imported goods? If you deduct all this, how does the Honorable Finance Minister claim that the entire 1 lakh crore will go into consuming domestic goods and services? It's only consumption of domestic goods and services will boost the GDP rate. And besides, what is 1 lakh crore when compared to the size of the GDP? The size of the GDP this year is 324 lakh crore. 1 lakh crore of 324 lakh crore is 0.3. Are you seriously saying, and are you asking this House to believe, that 0.3% will boost the economy? My humble advice to the finance minister is, don't rely on only one engine of growth, consumption. Look at other engines of growth like exports, capital investment. Those other engines must be revved up. You can't rely upon one engine of growth. Most of this consumption will not go into consuming domestic goods and services. Now contrast what she has forgotten. She remembered the middle class, but I congratulate her for that. But what about the section of the people whom she has forgotten? Look at the plight of Indian households. I'm taking purely from government numbers. Between 2012 and 2024, in the 12-year period, food inflation was 6.18%. Education inflation was 11%. Healthcare inflation was 14%. These have crippled Indian households. Household savings have fallen from 25.2% to 18.4%. And household consumption saving in September survey in 2023 shows, and mark these numbers, average monthly per capita expenditure of a rural family is only 4,226. And in urban areas, it is 6,996. Now we must examine these numbers more closely. This is the average for the whole India, 4,662 and 6,996, average for the whole India. But the bottom 50% will be even less.
And bottom 50% of the 50% will be even less. Now, what has this budget done for the average Indian household in the bottom 50% and the bottom 25%? Nothing. What relief has the Honorable Finance Minister given them? She could have done one of several things. I'm not saying she should have done all the 4 things that I'm mentioning. She could have done one of several things. One, instead of cutting income tax, or along with cutting income tax, she should have cut the GST. Everybody pays GST. The richest and the poorest pay GST. She could have cut GST. She could have cut the tax on petrol and diesel. Everybody indirectly or directly uses petrol and diesel. She could have increased the Maganrega daily wage. She could have increased that rate because the poorest are the ones who are going to Maganrega work. And she could have raised the statutory minimum wage across the board under the Minimum Wages Act. That would have benefited thousands and thousands of labour. She did nothing, but she was focused on income tax and she was focused on the Delhi election. Let me turn to another subject. The most gravest challenge facing the country is unemployment. I think all of you will agree, unemployment is the gravest challenge. Even the treasury benches must agree. Now, the periodic labor force survey, popularly known as PLFS, concluded that unemployment rate is 3.2%. Now, if the unemployment rate is 3.2%, and that the economic survey also repeats that, if the unemployment rate is 3.2%, I'm sure the London School of Economics, as well as every other university, teaches us that any unemployment rate less than 5% is equal to full employment. I won't get into the intricacies. If unemployment rate has fallen to 3.2%, why should we worry? We should all be happy because it's full employment according to economic theory. The same PLF says youth unemployment is 10.2%. The same PLFS says graduates unemployment is 13%. If youth unemployment is 10.2 and graduates unemployment is 13, how does it conclude that the total unemployment rate in India is only 3.2? For every job, for 100 jobs, there are 1 million applicants. For 1,000 jobs, there are several million applicants. The economic survey, sir, I quote, we need to create 78.5 lakh non-farm jobs every year until 2030. I asked the Honorable Finance Minister, what is her plan? What is the way forward to create 78 lakh non-farm jobs between now and 2030? They will be in government until 2029. So the bulk of the period is their government. They should tell us clearly a path to create 78 lakh jobs every year until the end of the government. Sir, the next I come to the famous PLI. The budget has 8 lines of expenditure on employment generation. I've looked at it closely. If I'm wrong, the Honorable Finance Minister will correct me. There are 5 lines of expenditure under PLA. There's 1 line of expenditure called New Employment Generation Program.
there is one line called Prime Minister's Employment Generation Program. There's one line called Skill India. I don't know the differences between these acronyms. What is the difference between Prime Minister's New Employment Generation Program and the New Employment Generation Program? We don't have a new PM, we have the same PM. On the 8 lines in the current year, mark these numbers, sir. On the 8 lines together, I've got the breakdown, but I'm taking all 8 lines of expenditure. In the current year, the budget allocation when she presented the budget last year was 28,318 crore. This is the gravest challenge. You allocated 28,318 crore. But what will you spend? By March 31, you will spend only 20,035 crore. Why are you not spending 8,000 crore on the challenge, which is the gravest challenge facing the country? Yes. The PLI scheme is a spectacular failure. Yes. Otherwise, you would have spent this money. Employment generation is a spectacular failure. Now I look at another aspect. The wages of salaried male worker as well as female worker, but I'm giving the numbers of the male worker. The wages of salaried male worker has fallen in the last 7 years from 12,665 per month to 11,858 per month. This is own numbers. From 12,665 to 11,858. The wages of self-employed male worker has fallen from 9,454 per month to 8,591 per month. So what is the position, sir? The position is incomes are falling, wages are falling, government expenditure is not keeping pace with the promises, household net savings have fallen, household debt has arisen. Yes. This is the plight of the bottom 50% of India. Yes. There's nothing in this budget for the bottom 50%. I think we cannot divide this house into one half speaking for the top 50% and one half speaking for the bottom 50%. I'm quite happy to speak for the bottom 50%, but I want the treasury benches also to impress upon their ministers to speak for the bottom 50% of India. Yes, yes. Man ki baat. Sir, let's take Make in India. They made such a hullabaloo about Make in India, Made in India. What was Make in India became Made in India. In global manufacturing trade, India's share is 2.8%. China's is 28.8%. So we are not a big player in manufacturing goods trade. The share of India's manufacturing in the GDP has fallen under this government. Yes. And I give the numbers from the economic survey. 2014, it was 15.07%. 2019, it has fallen to 13.46%. And 2023, it is 12.93%. These are the numbers of the World Bank. Economic survey has proportions in the GVA, but that has also fallen from 17% to 14%. So manufacturing as a proportion of GDP has not increased under this government. So manufacturing is a spectacular failure. PLI is a spectacular failure. So what has this government got to boast about after the last 11 years? I come to my penultimate point. Now, budget is about numbers. I don't want to burden the House with numbers, but I have to mention some numbers, because the budget is about numbers.
Now the FM, Honorable FM, claimed in a number of interviews that she has not only met the fiscal deficit target, but has improved upon the fiscal deficit target. Absolutely true. If you look at the numbers, 4.9 achievement was 4.8. But how did she achieve this 4.8? She cut capital expenditure by the central government by 92,682 crore. Not revenue expenditure, sir. Capital expenditure by the central government was cut by 92,682 crore. She cut the grants in aid to states for creating capital assets, that's another form of capital expenditure, by 90,887 crore. So total cut in capital expenditure by the center and the states, I'm not apportioning blame, but the center and the states in the current year will be 1,83,569 crore. By cutting capital expenditure by such a humongous amount, she saved on the fiscal deficit 43,785 crore. I can understand if she has saved on the fiscal deficit 1,83,000 crore. It is bad policy, but I will understand. But after cutting 1,83,000 odd crore, she saved about 44,000 crore. Is it good policy? I don't know. Is it good economics? I say no, it is not good economics. Yes. You can't cut capital expenditure and compress your fiscal deficit and say, I have met my fiscal deficit, I've improved my fiscal deficit. On the expenditure side, I want honorable members, all of us are concerned, to look at these numbers. Where are the cuts followed? On health, 1,255 crore. On education, 11,584 crore. On social welfare, 10,019 crore. I wish the Agriculture and Rural Development Minister was here. On agriculture, the cut is 10,992 crore. On rural development, it is 75,133 crore. And on urban development, it's 18,907 crore. Why do you make these cruel cuts? There are other unkind cuts, I won't give the numbers, on Poshan, Jal Jeevan Mission, National Social Assistance Program, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Crop Insurance Scheme, Urea Subsidy, PM Garib Kalyan Yojana. And all these programs there have been cuts. The most cruel cuts are, I hope I'm pronouncing this correctly, sir, Anusuchit Jati Yojana. Anusuchit Jati Yojana. 1,340 crore has been cut. Young Achievers Scholarship, 455 crore. Post-Metric Scholarship for Scheduled Caste, 860 crore. Program for Development of Scheduled Tribes, 670 crore. You cut money for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and Anusuchit Jati. And you say, I have reached my fiscal deficit, I've improved my fiscal deficit. Look at the grand announcements in this budget. One grand announcement was Urban Challenge Fund, para 58 of the budget speech. I was impressed. Urban Challenge Fund, 1 lakh crore was announced. What is the allocation? 10,000 crore. Jal Jeevan Mission, para 55 of the budget speech. Jal Jeevan Mission says, we have provided water to 80%
of the population of India, and we will provide for the remaining 20%. We are therefore extending the scheme. The budget estimate for the current year was 70,163 crore. Actual expenditure is 22,614 crore. I mean, this is pure magic, sir. You don't spend 1/4 or 1/3 of your money, and you claim that everybody has been provided water. Now I come to my last point. Sir, you will give me one more minute. I would, sir, I would. I'd undertake it. Yeah. Now, what did the CEA say? The Chief Economic Advisor is a reasonably autonomous office. I'm glad the Honorable Finance Minister has given him the freedom to speak his mind and to be frank and forthright. I congratulate the Honorable Finance Minister in the end for that also. What did he say? Get out of the way. Yes. It's all we are saying, get out of the way. In a different context. Deregulate. Deregulation drives growth. Work towards giving to people back their agency and enhancing the economic freedoms of individuals and organizations. What is the response of the Honorable Finance Minister? To get out of the way and to deregulate. Her response is to announce in the budget speech 7 new schemes, 8 new missions, and 4 new funds. Now, where will the money come from these schemes and missions and funds? I don't know, because there's no allocation. Sir, in conclusion, I want to say this. Half a minute. Governance is in the present. There is a government, but I'm sorry to say there is little governance. There is no philosophy, therefore no policies. In 1991, we faced a graver situation. There was a man entered this parliament, entered the North Bloc. Yes. He had an economic philosophy. Yes. He followed it with policies that required wisdom and farsightedness. Dr. Manmohan Singh had them. And I'm urging the Honorable Finance Minister to recapture the wisdom and the farsightedness of Dr. Manmohan Singh. One last question. This is through the Finance Minister to the government. Why have you not conferred a Bharat Ratna on Dr. Manmohan Singh? Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome once again to the Business Today, India Today Budget Roundtable. To get an opposition perspective, we are joined by the perspective of the largest opposition party. We are joined by the former finance minister, 9-time finance minister on 9 budgets that he's delivered. Please give a big hand to Mr. P. Chidambaram, the former finance minister. Appreciate your joining us, Mr. Chidambaram. You're perhaps eminently qualified to dissect a budget because your budgets over the years were also dissected. So I want you to be fair and objective to the extent that you can be, and tell me what was the best thing you saw in Nirmala Sitharaman's budget this year, and the worst thing or the most difficult, the decision that you disagreed with most. The best and the only thing that can be welcomed is the income tax break she gave to 3 crore 20 lakh tax-paying income tax filers. On a selfish note, I'm one of them. So I welcome it. But that's only 3 crore 20 lakh. I think she forgot that India's population is about 143 crore. That's the worst thing.
You remember 3 crore 20 lakhs is good, and the only thing that you can welcome, but you forget that India's population is 143 crore. But the truth of the matter, Mr. Chidambaram, in a country of 1.4 billion people, you can't please everyone. So every budget will prioritize at that particular moment the group or the class they think will actually drive the economic engine forward. And Nirmala Sitharaman and her and the Modi government have taken a conscious bet on the fact that middle class savings could rise, savings could result in consumption, and thereby spur demand and growth. That's something that you and others have been arguing for a long time. We need demand-led growth. No, we have never argued that. It's completely wrong economics. She says she'll put 1 lakh crore in the hands of the taxpayers. Yes. Good. But, as was pointed out by several writers yesterday and today, the 1 lakh crore will not go into consumption. In fact, one of the senior officials of the government has said, I think the Secretary Banking, he hopes that half of it goes into bank deposits. It can go into paying old debts. Every household is indebted. Even among the tax-paying class, they'll pay back old debts. They will travel abroad. They will consume imported goods. So what proportion of this 1 lakh crore will go into consumption of domestic goods and domestic services? Assuming all the 1 lakh crore goes to consume domestic goods and domestic services, it's still 0.3% of India's GDP, which is 324 lakh crore. 1 lakh crore will stimulate 324 lakh crore. Completely wrong economics. Show me any economist who will agree with you. KV Subramaniam, former chief, just a minute, KV Subramaniam, former economic advisor to this, chief economic advisor to this government, now executive director, IMF, writes, middle class savings are roughly 18%, and if we round it to 20%, it suggests that 80% of the amount will be spent. The consumption multiplier, which is the inverse of saving rate, is therefore about 5. Therefore, he says, we can anticipate a total increase in consumption of around 5 lakh crores, which represents around 2.7% of GDP. This is what he claims. And the truth of the matter is, Mr. Chidambaram, even in the past, you have advocated the need to spur demand. Nobody says you should not spur demand. In fact, we are saying you must stimulate demand. But demand among the masses of the people. Do you know that the monthly per capita expenditure, average monthly per capita expenditure, released in December 24, we are only in February, is 4,122 rupees in rural areas and 6,996 rupees in urban areas. This is the average for the whole country. If you take the bottom half, it'll be much less. It'll be about 3,000 rupees in current prices and maybe 4,500 rupees for urban India. You have to stimulate demand among them. If the masses consume, it'll stimulate demand. I'm not saying this will not stimulate demand, but don't exaggerate it. Mr. Krishnamurthy may have said that. He is wrong. And that is why I believe he's the former chief economic advisor. No, but let's be very clear, Mr. Chidambaram. The truth of the matter is, as I said, during a budget, and you know this better than anyone else, you make choices. The government of the day has foregone about 1 lakh crore in revenue as a result of these tax cuts. Yes. On the other hand, you and others expect fiscal responsibility, expect the fiscal deficit to meet its targets. If, for example, as you're advocating the masses, those who are out of the tax net needed benefits so that they would also join this consumption demand cycle, you would have set a minimum income scheme, right? That's another. No, just a moment. So how do you? Let me ask you a question. Do they deserve money left in their hands or not? You said, tell me. We know your position. I think the masses deserve money in their hands, which means GST should have been cut. The taxes on petrol and diesel
or the prices of petrol and diesel have to be cut. GST cuts, sir, sorry Just to a intervene, would happen in a GST council meeting, in which your state finance ministers could easily argue and say, we want a And cut they in will GST. never win. won't. They will never win. You don't know the voting pattern. The voting pattern is structured, and I told Arun Jaitley, this is completely wrong. This is anti-federal. He says, no, let's pass this bill and we'll amend it later. The structure of voting is that without the central government support, no proposal can be passed. And Palanivel Tyagarajan, who represents Tamil Nadu, the former finance minister, said, if I want to get a small thing passed, I must have the support of the central government. Then we go along with whatever the central government says, because we cannot get anything passed. The structure is such that they cannot get anything passed without the central government's vote. So you would rationalize the GST regime? I'll tell you 4 things I would have done. Not all 4 things. 1 or 2 of the 4 things. 1, GST cut. Now today, the Revenue Secretary says, yes, GST rationalization is due. We have been saying that for the last 2 years. He said it today. GST cut. Or petrol and diesel taxes or prices reduced. 3, statutory minimum wage raised. Or Maganrega wages raised. You can't do all 4 things in the same budget, but you could have done 1 or 2 of them. I'm not grudging the middle class getting 1 lakh benefit. But what about the remaining 142 crore people? You know, it's easier said than done. It's Mr. easier Chidam. done than said. No, if you have the will, you can do it. Sir, a minimum income that you're talking about, which you are almost like a minimum income guarantee scheme. No, I'm not saying that. No, effectively that's what you're saying. No, I mean, how it's are you going to put money in the hands of those who you say are out of the tax net? I just said that. GST cut will benefit everybody. Because everybody, poorest and richest, pay GST for every service, every goods, there is a GST. A GST cut would have put money in every pocket. We'll wait to see whether GST rationalization happens when the next GST... petrol and diesel prices are cut, it would have benefited everybody, including the farmer who buys diesel for his tractor, for his two-wheeler. So some of the highest taxes on petrol and diesel are also in states which are ruled by the opposition. Everyone wants to take benefits from the taxation system on petrol and diesel. But and it is not even part of the GST structure at the moment. You provide a lead, you cut and challenge the states to match that cut. You decide, all right, we will cut it by 5 rupees a litre. You cut 2 rupees 50 paise and challenge the states to match it. So one important group, which you've also been talking about, which the finance minister claims she has addressed, is the MSME sector. In the past, the Congress party has claimed that this government has simply not done enough for the MSME sector. Now, in her budget speech, the finance minister referred to investment and turnover limits for classification of MSMEs increasing by 2.5 and 2 times more. She spoke about the new increased credit guarantee for MSMEs, doubling the credit guarantee. Are these not all positive steps that you hope will once again revive the MSMEs, many of whom have perhaps been the worst sufferers post-COVID? I have 2 entries in the budget at a glance, which specifically refer to the MSME. Mm-hmm. One is raising and accelerating MSME performance, RAMP. I don't know where that scheme stands today. It may have fallen by the wayside like many other schemes. The allocation last year was 1,170 crore, less than the previous year. Allocation 24-25, 1,170 crore. They actually spent 750 crore. The other one is guarantee emergency credit line facility to eligible MSME borrowers. The allocation was
for the current year, much less than the previous year, be that as it may, 9,813 crore. They actually spent only 7,500 crore. This shows their concern and attention for the MSMEs. Why are you not spending your money? There are 150 items in the budget at a glance. The major items for the expenditure budget have been picked up. 78 items out of 150 items, they did not utilize their allocation. The reasoning given is 2023-24 or 2024-25 was the big election year. You had two quarters as a result where the government lost out because the focus was on the election cycle. I've heard the story. This is a completely hollow story. It's the same government, same ministers in the same portfolio, the same officials in the same position. Elections results were announced in May, and the government took office in May. At best, April and May was lost. But it's not a new government. It's not a new minister. It's not a new official. In fact, the media published before the elections that Mr. Modi had directed all the ministries to prepare a 100-day plan. And every ministry, I assume, would have prepared a 100-day plan before the election. So what happened to the 100-day plan? I mean, why are we not hearing about the 100-day plan? Publish the 100-day plan and say what you did in the first 100 days after you assumed office. It is a bogus argument, a hollow argument. Sir, are you willing to at least concede, though, that reduction in the fiscal deficit or maintaining a fiscal deficit is an achievement of this government? That will you give it credit for improving the fiscal deficit? Yeah. Or are you again going to say that it comes at a high cost, that they haven't met their expenditure targets? I didn't say that. I didn't say that. Why are you putting words in my mouth? They have overachieved the fiscal deficit target from 4.9 to 4.8. But how is it done? Capital expenditure is cut by 92,000 crore. Grants and aid to states for creating capital assets was cut by another 92,000 crore. So center and state have cut capital expenditure by 1,84,000 crore. That's how they achieved the fiscal deficit. In the Rural Development Ministry alone, Rural Development Ministry is concerning the masses of the poor people, I assume. In the Rural Development Ministry alone, the budgeted allocation and the revised estimate, the cut is 72,000 crore. Go into the fine print. You will see how they achieved their fiscal deficit. Of course, the IMF and the World Bank and the World Economic Forum will look at only fiscal deficit overachieved. 4.9 becomes 4.8, and they will all stand up and applaud. But how was it achieved? By cutting capital expenditure by 1,84,000 crore, to the extent I can make out. Maybe there are some more numbers. Please remember, tax cut has a multiplier effect of 1.1. Capital expenditure has a multiplier effect of 1.3. Every rupee spent on capital expenditure has a multiplier effect of 1.3, rather than consumption expenditure has only 1.1. So the fact, though, is, and I read your statement when the chief economic advisor, the current chief economic advisor, gave his economic survey, saying that he had done some plain speaking. You were quite willing to give him an element of credit for the economic survey, particularly when he said that
government should get out of the way. Yeah. What The they got truth out of the of it? matter is we've heard this for the last 30, 40 years, including when you were, with due regard, the finance minister of the country, that we actually need less government. The truth of the matter is every government that comes to power in its budget brings in more and more schemes. Wrong again. The day I became Commerce Minister under Mr. Narasimha Rao, I think I became Commerce Minister on June 21. On July 4, we abolished the DGFT. 1991. I mean, 1991. Yes, no, that's exactly what I'm saying. That's 1991. Successively, you've also been finance minister. You sir. said you have never done it. No, I never said you've never done it. I said over the last 30 years, a number of the promises of the government getting out of the way, as you praise the chief economic advisor, are never met because every finance minister wants to come up with his or her new schemes in every budget. I confess that when I abolished the DGFT, I was not finance minister. I was only commerce minister, but I had the support of the finance minister. Let me The just... DGFT was abolished. Sure, that nobody denies you your achievements there. I mean, that entire period of 91... We have never done it. Why do you say we have never done it? No, I never said never. FERA, all I said is that the promise is never met by the actuality. FERA was changed to FEMA, decriminalized. Now, in the last government, Mr. Modi's government, they have criminalized one section of FEMA. Now the finance minister assures us that FEMA will be decriminalized. Why do you take a decriminalized law, criminalize it, and then say 3 years later, I'll decriminalize it? Why do you do that? In my final segment, I just want to ask you and pivot a bit to what is likely over the next 12 months to be the bigger challenge, the global headwinds that we face with a US president who can be notoriously disruptive. Given the fact that we've already seen US President Trump's tariff policies leading to a potential tariff war with China, with some of his neighbors, how do you see India should play? Do you agree that at least in this budget, the government has recognized at some level that you cannot go to protectionism in this present world? You're going to have to find a way to engage with America. See, you can put up any defense of a belated correction. How many years, how many columns have I written? Don't go to protectionism. Don't raise tariffs. Don't impose anti-dumping duties indiscriminately. Don't impose safeguard duties indiscriminately. Don't impose cesses indiscriminately. But this government was pleading for protectionism. The government championed protectionism on the ground of Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat, which is what is self-reliance. Self-reliance's old name was protectionism. Protectionism's old name was inward-looking economy. You change the name. They have now realized that protectionism is anti-trade, is bad. They did not join any bilateral treaty. The one multilateral treaty that was inviting them to join 1 year later, they rejected it. You know all that. So this government is the symbol of protectionism. If they have now realized that protectionism is bad, I compliment the government. Do you believe that, how would you deal with what is likely to emanate out of Washington in the next 12 months? How do you believe, therefore, India should respond? Headwinds will be there, but unfortunately, the wrinkle is this headwind comes with an unpredictable president of the US. Earlier headwinds were predictable. When we had an international financial crisis, we could predict how the Fed will behave, how the Treasury Secretary will behave. When we had the Asian financial crisis, when we had the taper tantrum, we could predict how this gentleman will behave. But today, the headwind is coming from the US, and US is headed by an unpredictable President Trump. It's very difficult to deal with that situation. The only man who's met any minister of Mr. Trump is Mr. Jaishankar. So only he can give you a ground situation or a feel of
what it's like to be in Washington after January 20. I don't have that feel. When Mr. Modi goes there on February 12, he will get a better feeling. But you have to handle him very carefully. After all, Mexico, there were tariffs, but they have shelved the tariffs for 1 month. He has said India is not included in the first round. First round. European Union has threatened counter tariffs. Canada's threatened counter tariffs. So it's a complete mess. Complete mess. You can't make sense of it sitting here in Oberoi. But the worry I have is, given the nature of Indian politics at the moment, which is hyper-polarized, hyper-partisan, and in general, politics is defined by the one line that where you stand depends on where you sit. Given that you're in the opposition versus government, let me give you an example. I remember when the rupee was falling and you were the finance minister and you were attacked by Prime Minister Modi and others. The Prime Minister then compared, in fact, the falling rupee to the age of Dr. Manmohan Singh. Was it right? No, just a minute. Now was he right? No, it's not. Just a minute, sir. Now, of course, the rupee is falling even further. The question I ask you, is it at all possible to build any kind of consensus in economic policies given the kind of polarized environment? We saw what happened with farm laws. We've seen it, what's happened in the past with FDI and insurance. Governments say one thing when they are in the opposition and say completely the next thing when they are in the power. I'll have to live. I have to catch a flight, I told you. It is possible, provided the government invites the opposition parties for a closed room discussion. For example, if the Prime Minister is going to the US on February 12, he should invite half a dozen leaders, not all the parties, half a dozen leaders of 3 or 4 major parties, and say, this is the situation, this is what I wish to approach it. Would you have your inputs? I think that habit has been deliberately discarded by this government since day one. If they invite people to a closed-door discussion for half an hour and an hour, I think many of the issues can have a bipartisan solution. Did you do that when you were finance minister? Can I be honest and ask you that? Of course. You called leaders of the opposition in a closed-door meeting? Yes, I'm saying so. When I became finance minister, the first gentleman I met was Jaswant Singh, and then Yashwant Sinha. And then Yashwant Singh, when he became finance minister, he invited Dr. Manmohan Singh and me to a close private dinner at his residence. We attended the dinner. But all that has vanished after Mr. Modi took over. So you're making a call at the India Today, Business Today, Budget Roundtable to Nirmala Sitharaman and Prime Minister Modi that before the Prime Minister goes to the United States, call leaders of the opposition, let's have a closed-door meeting and evolve a consensus on the way forward. Am I correct? Yes. I'm saying he did not announce it. He need not announce what the consensus is, but he can listen to them and take their views, share his initial impressions, and then go to the US. At least the US will know that there is a bipartisan consensus behind the messages which Mr. Modi is carrying to President Trump. Okay. Mr. Chidambaram, I know that you've got to catch a flight. You've come despite that to this event, and I think you've at least given the impression that we could even have a constructive opposition and hopefully a less unilateral government as well. Maybe that's the way to take the economy forward. Thank you very much, Mr. P. Chidambaram, for joining us. Thank you so much, Mr. P. Chidambaram, and thank you so much, Rajdeep, for that exciting conversation.